Hi, hello, good evening, everyone. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on ARYAN Tutorials. कैसा चल रहा है आपका तैयारी? I hope तैयारी ठीक चल रही है. Hi मंथन. Hi अमन. Hi प्रशंसा. आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कंप्लीट करेंगे. सर आंसर्स में स्मॉल फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. डेफिनेटली मैं आपको आंसर खुद दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है. ठीक है, I'll show you my students' answer over here. You'll get a better perspective. और को repeated revision is the only way, बेटा. चलो, perfectly fine. Let's quickly dig into organizing today. Start करते हैं. चलिए. With reference to the process of grouping similar activities, what does the term departmentation signify? Departmentation का मतलब क्या है? What is the meaning of departmentation? Departmentation is nothing but just task division, right? टास्क को डिवाइड करना को ही डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं. सो डिविजन का एक और वर्ड क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन, because organizing is associated with classification of different tasks and activities and work into different categories. So it will be option B, classification of related job into manageable unit. ठीक है. हाय हेलो एवरीवन. चलो पढ़ाई करते हैं, बातचीत बाद में होती रहेगी. नेक्स्ट वन, with reference to the benefit of a sound organization. Sound means an organization which is rational. ठीक है, जो सही organization है. Select the odd one out. Which one is the odd one out? Very good. Encourages mental revolution between worker and management is basically a principle. ठीक है, it is basically a principle and not a benefit. Rest all are your benefit advantages, but then this is a principle. So that is the odd one out. ठीक है. Next one. Mr. Akash, a production manager, assigns the task of quality checking to his assistant, Rohan, and grants him the authority to reject defective units. However, when the final batch is found to be of poor quality, the general manager holds Akash accountable for failure. Which principle of delegation is best illustrated over here? आपको दो सिलेक्ट करना है.
Which principle is delegated here? अकाउंटेबिलिटी कैसे पास ऑन नहीं हुआ? आकाश को अकाउंटेबल किया गया है. One second. Mr. Akash is the production manager, which assigns the task to Rohan, granting him authority can be delegated to jayega hi to reject defective unit. However, when the final batch is found to be of poor quality, the general manager holds Akash accountable for failure. Which principle of delegation is best illustrated here? Very good. Q भी होगा. So it is only P and Q. ठीक है? Authority can be delegated, but accountability and responsibility cannot be delegated. ठीक है? Authority was in the general manager's hand. Akash assigns the task of quality to his assistants. Rohan grants him the authority to reject defective unit. However, when the final batch found to prove Akash is held accountable for the failure, which principle? Accountability cannot be passed on. ठीक है? PN क्यों जाएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कल हो जाएगा बेटा एमसीक्यू के फॉर्मेट में. ठीक है? It will be D. Next one. Blue Star Limited is known for its strict adherence to the written rules, official channels of communication, and a clear scalar chain. While this ensures stability, employees often find it difficult to adapt quickly to the sudden market changes. Difficult to adapt quickly because the rules do not allow it. Which limitation of formal organization is highlighted in this case? Very good. Strict adherence causes rigidity and lack of creativity. You cannot take any decision on your own due to adherence to formal structure or scalar chain, prescribed chain of command in the organization. Next one. A large pharmaceutical company produces medicines, surgical equipment, and health supplement. Each of these lines has its own separate production, marketing, and finance department to ensure focused growth and performance evaluation. Identify the organizational structure. डिपार्टमेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन या एक्टिविटी के हिसाब से काम डिवाइड हो रहा है. सो कौन सा है ये? मेडिसिन भी बन रहा है, सर्जिकल इक्विपमेंट भी बन रहा है, हेल्थ केयर सप्लीमेंट भी हो गया, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए. ठीक है? अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट हो गए. वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में डिविजन बनाते हैं हम लोग. ठीक है? हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट सेगमेंट या डिविजन बनता है. सो इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर. चलिए नेक्स्ट वन. A marketing firm decides to give its regional managers the power to fix product prices and launch local advertising campaign without seeking approval from the head office. This is done to ensure faster decision making and to develop future leaders as well. Faster decision making and future leaders as well. Identify the philosophy of management given here. डिसीजन मेकिंग, डिसाइड्स के साथ पावर आ रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर दिया जा रहा है. सो इट इज नॉट डेलीगेशन, इट इज वेरी गुड, वेरी गुड.
इट इज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, डेलीगेशन में आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हो, बट डिसेंट्रलाइजेशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग कर देते हो. ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हो. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. चलो नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन. Assertion is functional structure is most suitable for large organization producing a single limited line of product. Reason, it leads to product specialization and allows for easy fixation of responsibility for profit. ध्यान से देखिएगा. आ इसको देखो. फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होता है. फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन का स्पेशलाइजेशन होता है. ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन का होता है. असर्शन इज ट्रू बट देन द रीजन इज फॉल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, स्टडी द एनालॉजी एंड आंसर. Functional specialization is functional structure, product specialization will be very good, it will be divisional structure. ठीक है, it will be divisional structure. An optional policy is decentralization, mandatory is very good delegation. ठीक है, डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा. डिसेंट्रलाइजेशन हाउएवर इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट कि उनको करना है कि नहीं करना है. चलो नेक्स्ट वन, an informal organization is shown on the official organization chart of a company. क्या इसको दिखाया जाता है ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे? स्पॉन्टेनियस होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी दिखाया नहीं जाता है, सो दैट इज फॉल्स. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड. क्या वर्कलोड कम करने में हेल्प करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? yes it does. it does, so that is true. ठीक है, next one, a manager is able to effectively supervise only 5 subordinates because the nature of work is highly complex and non-routine. The concept illustrated here is dash, fill in the blank. बोर्ड एग्जाम में आता है. इफेक्टिवली 5 लोग को ही सुपरवाइज कर पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वर्क कॉम्प्लेक्स है, नॉन रूटीन है. सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल because span of control tells us that how many subordinates can a superior handle. No, not management by exception, it is a span of control. Management by exception आपको बताता है कि managers are supposed to pay attention to only critical areas. That is management by exception. But over here, how many subordinates will report to a manager? That is span of control. ठीक है, next one, Zenith Limited is undergoing a process where it is identifying all the activities required to run a new factory, dividing them into specific roles and assigning them to individuals based on their skills. Identify the specific step
of the organizing process being performed? Identifying all the activities required to run and then classifying them into specific roles and then assigning them duties based on their skill. कौन सा हो गया? It is identification and division of work. ठीक है? Not only just assignment. Assignment secondary है, पहले identification होगा, division होगा, फिर आपका assignment आएगा. So primary step है आपका identification and assigning. Next one. State one unique feature of informal organization that distinguishes it from formal organization. Unique feature. यूनिक फीचर कौन सा है ऑर्गेनाइजिंग का? ठीक है, दिस इज अ यूनिक फीचर. एकदम अगर यूनिक का बात करें तो स्पॉन्टेनिटी इज अ वेरी यूनिक फीचर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली बनाया जाता है. इट्स अ डेलिबरेट एक्शन, बट देन इनफॉर्मल इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. In a garment factory, the stitching department, the cutting department, and the finishing department must work in perfect harmony to ensure the final shirt is ready for export. The production manager ensures that the output of one department becomes the input for the next without any delay. Which step of organizing is highlighted over here? Very good. It is coordination of activities. Synchronity है, so coordination आ जाएगा. Coordination is the essence of organizing as well. ठीक है? It creates synchronity. चलिए 14th one. Organizing provides the framework or the skeleton within which the enterprise functions. Identify the term used for this framework. Organizing अगर framework दे रहा है तो वो हो गया organizational framework. ठीक है. The key term is organizational framework over here. Organizational framework या organizational structure. ठीक है. चलिए केस स्टडी देखिए. Tech Solution is a software development firm that recently changed from a small office to a large enterprise with 500 employees. The CEO, Mr. Khanna, noticed that decision making had become slow because every minor expense or leave application had to be approved by him. To fix this, he issued a policy manual stating that project manager now has the full power to approve expenses up to 50,000 and manage their own team's schedule. He believes that this will not only speed up the work but also prepare the managers for future leadership role. Full power दिया जा रहा है. So ये क्या हो गया? Don't get confused. Full power. फ्यूचर लीडरशिप रोल्स के लिए भी लोग रेडी होंगे एंड टू स्पीड अप वर्क के लिए भी होगा. एंड दैट टू कीवर्ड इज फुल पावर. व्हेन फुल पावर कीवर्ड है जब एब्सोल्यूट अथॉरिटी का बात हो रहा है,
यानी कंप्लीट अथॉरिटी का बात हो रहा है, जिसमें डिसीजन मेकिंग आ गया। जैसे ही डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, इट इज नॉट डेलीगेशन, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इट इज नॉट डेलीगेशन, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सप्लेन तो आप कर देगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिलोसफी आइडेंटिफाइड इन वन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस एंड स्कोप। वाओ, अगर ऐसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे दिया तो वन बाय डिफॉल्ट हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको आपका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसी में। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। वस्त्र टेक्सटाइल is a diversified company manufacturing cotton fabric, silk garment, and synthetic yarn. Each product line operates semi-autonomous. What is the meaning of word autonomous? Independent. And semi मतलब आधा ही independence है। ठीक है, absolute decision making नहीं है, with its own separate purchasing, production, marketing teams. Within the silk division, employees from the design team and the logistic teams often meet for lunch and have formed the Saturday Hiking Club, where they discuss both personal interest and office ka challenges. Identify the type of organizational structure adopted by Vastra Textiles at the corporate level. Justify your answer. किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है? अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, राइट? कॉटन फैब्रिक अलग है, सिल्क गारमेंट के लिए अलग है, सिंथेटिक यार्न के लिए अलग है, सो इट बिकम्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। इट बिकम्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। एंड सैटरडे हाइकिंग क्लब जो बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो कौन सा हो गया? विच ऑर्गेनाइजेशन इज दैट? परफेक्ट, इट इज इनफॉर्मल। ठीक है, इट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट्स नॉट फंक्शनल, इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। पहला वाला प्रोडक्ट के हिसाब से हो रहा है, सो इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए थर्ड वन। Miss Aruna is the head of the finance department in a multinational bank. She has divided the total work of her department into specific jobs like accounts receivable, taxation, and audit. She then assigned these tasks to specialists. For instance, an auditor was assigned the audit work, and to ensure the work is done, she gave auditor the power to access all the financial record. However, she clearly defined that auditor must report to her every Friday. Authority दिया, but responsibility खुद के पास है. Responsibility or accountability is retained. तो ये क्या हो गया? Which concept? Briefly explain the 4 steps in the process of organizing mentioned in this scenario above. तो आइए चलिए थोड़ा सा डिकोड करते हैं. She has divided the work into specific jobs, assigned these tasks, power to access, must report. ठीक है, या क्लियरली डिफाइंड भी आप बोल सकते हो. चलो उसके हिसाब से बताइए क्या क्या स्टेप्स बनेगा. फर्स्ट स्टेप इज वेरी गुड, इट इज डिविजन ऑफ वर्क. Then it is grouping. Then it is assigning
देन इट इज डेलीगेशन एंड देन इट इज कोऑर्डिनेशन. ठीक है. एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी आ गया. ठीक है. सो इस हिसाब से होगा आपका डिविजन ऑफ वर्क, assigning, granting authority या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप बोल सकते हो, एंड एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन. ये बन गए आपके 4 स्टेप्स. ठीक है. क्यों? डिपार्टमेंट इनटू स्पेसिफिक जॉब्स अगर आ गया तो ग्रुपिंग भी राइट है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज. ठीक है. चलो, वी कंप्लीट आवर ऑर्गेनाइजिंग डन. अगला क्या है आपका ऑर्गेनाइजिंग के बाद? डायरेक्टिंग. चलिए, with reference to the features of directing, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए स्टेप्स को, बार बार ऑटोमेटिकली हो जाएगा. विथ रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट डज द टर्म इनिशिएट एक्शन सिग्निफाई? बताइए. एक्शन इनिशिएट करने का मतलब क्या हुआ? स्टाफिंग नहीं, कोई बात नहीं, स्टाफिंग इसके बाद कर लेते हैं. प्लान्ड गोल्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना. ठीक है. कन्वर्टिंग योर planned goals into actual performance, that is initiating action. Next one, with reference to the functions of a supervisor, select the odd one out. सुपरवाइजर क्या नहीं करता है? सुपरवाइजर क्या नहीं करता है? परफेक्ट. लॉन्ग टर्म पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाता है, सुपरवाइजर नहीं बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, Innovate Tech, a software firm, provides its employees with air-conditioned cubicles, means office spaces, and a subsidized cafeteria and a health insurance plan. However, the employees are still unhappy because their work is rarely recognized by the management. According to Maslow's theory, which level of need is currently unsatisfied? फिजियोलॉजिकल क्यूबिकल से हो गया, इंश्योरेंस से सेफ्टी हो गया, सोशल नीड्स भी फुलफिल हो गया, recognition is basically esteem needs, so it is only S. ठीक है. It is only S. बेटा रिवीजन वीडियो आप जाके किसी और के चैनल से देख सकते हैं.
चलिए, a manager at a textile mill notices a decrease in productivity. Instead of imposing penalties, he invites the worker for discussion, listens to their grievances, means complaint, regarding the heat in the factory, and promises to install better ventilation if they meet the next target. Which leadership style and communication objective are represented here? जब एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है डिसीजन में आके या डिस्कशन किया जाता है, तो ये क्या है? आप थोड़ा सा उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे रहे हो, एंड दैट इज अ स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ठीक है? दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप. चलिए, नेक्स्ट वन. And export manager sends an email to a foreign client using heavy technical jargon and complex industry codes. The client, who is not an engineer, fails to understand the requirement, leading to delay in the shipment. Which barrier of communication is illustrated here? Failure to understand that code. Code language नहीं समझ में आना कौन सा बैरियर हो गया? Very good. It is a language or semantic barrier. ठीक है. मेरिट्स डीमेरिट्स 5 याद करना होगा, 5 इन टोटल. रीड सारा करके रखिएगा. चलिए, to ensure that a new automated assembly line is accepted by the worker who fear job losses, the plant head holds a series of workshop explaining how the new tech will reduce physical strain and increase their technical value. Which benefit of efficient directing is being leveraged or indicated here? Semantic barrier is language barrier, बेटा. जब दो लोग अपनी बातें नहीं समझ पाते उसको हम लोग सेमांटिक बैरियर बोलते हैं, ठीक है? एक नया ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आया है जिसको अडेप्ट करने के लिए बोलना एज अ नेसेसिटी बताया जा रहा है कि करना जरूरी है. तो व्हाट इज द एम? इट इज टू ब्रिंग अबाउट चेंज, फैसिलिटेट चेंज. फैसिलिटेट मींस एनेबल, ठीक है? enabling change, that is facilitating change, making it happen. चलिए, next one. Supervision is considered a key activity at the operating level of management. It involves face-to-face contact and direct guidance of workers in the performance of their task. ऑपरेशनल लोअर लेवल पे होता है सुपरविजन, जी हाँ होता है. फेस टू फेस कांटेक्ट में होता है, जी हाँ होता है. गाइड करने के लिए होता है, जी हाँ होता है. So both assertion reason are true and reason is the right explanation of assertion. ठीक है? Study the relation between the first and the second words given and complete the analogy. Internal force अगर motive है तो process of inducing action. Induce करने का मतलब क्या होता है? Induce का मतलब ही अगर आपको मैं बता दूं, Induce का मतलब होता है motive. तो ये क्या निकला? It is motivation. ठीक है? It is motivation. Directing is wider in scope. Supervision is part of directing, right? Supervision is part of directing.
नैरो इन स्कोप हो गया, या आप एलिमेंट भी बोल सकते हो इसको. इट इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. बोथ आर एक्सेप्टेबल. True or false? Leadership can only be exercised by individual holding a formal managerial position. Leaders कौन होते हैं? Who are leaders? Leaders are influencers, right? They can influence, they can mold. क्या हो रहा है? They can mold the action of the others. Not necessary that they have to be only in the formal position. They can mold even being in an informal role. ठीक है? It can be both informal and informal, so it is false. First one is false. Feedback is a step in communication process that completes the loop. जो पूरा communication process को खत्म कर देता है feedback. सही बात है. It is true. A leader allows his team members to set their own deadlines and choose their own method of working, stepping in only when the team explicitly, का मतलब हो गया directly, asks for help. This leadership style is very good. It is free reign और laissez faire भी बोला जाता है. ठीक है, free reign उसका दूसरा नाम है, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. फ्री रेन और laissez faire. Next one. Identify the quality of a good leader described here. The ability to anticipate future event, assess, yani evaluate pros and cons logically and make timely decision based on fact rather than sentiment. Which feature, which quality of a good leader is highlighted here? दूरदर्शी, दैट इज एंटिसिपेशन करने के लिए आपके पास फोरसी करने का पावर होना चाहिए, यानी विजनरी होना चाहिए. एंड देन डिसीजन मेकिंग भी ले रहा है, प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है. तो पूरी कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के बेसिस पे जा रहा है. सो इट विल बी विजन एंड फोरसाइट. ठीक है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है वर्कर्स के ऊपर, एक्सेसिव कंट्रोल. नहीं 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 नहीं, इमोशन नहीं होगा. इमोशनल स्टेबिलिटी होता है व्हेन द लीडर इज नॉट गवर्न्ड बाय और स्वेड बाय एनी काइंड ऑफ व्हाट डू आई से, any kind of difficult situation. In that case we make use of emotional stability. ठीक है, emotional IQ strong होना चाहिए उसमें. चलिए, in the communication process the material that the sender wants the receiver to understand, like words, ideas or fact, is called the material. Material. Material is basically your message. ठीक है, message is to be decoded on the part of receiver. So material is the context. Material को समझना is message. Next, a supervisor notices two workers arguing over the use of a tool. He intervenes, yani interferes, listens to both and suggests a shift-based rotation for the tool to maintain harmony. Which function of supervisor is being
performed. आर्ग्यूमेंट में घुस रहा है, इंटरवीन कर रहा है एंड हार्मनी लेके आ रहा है. ठीक है. Very good. It is handling complaint and grievances, that is problems. ठीक है. Grievances means your problems. चले आगे बढ़े. Directing is described as the heart of management. Which of the following justifies the statement? Why is directing the heart of the management? हार्ट का काम क्या है? जीवन प्रदान करना, इनिशिएट कराना, कोई भी एक्शन को किक स्टार्ट कराना. सो किक स्टार्ट कैसे होगा आपका? लाइफ स्पार्क के थ्रू. ठीक है. सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. चले आगे बढ़े. केस स्टडी. Sky High Airlines is facing a crisis of low morale among its ground staff. The HR manager, Mrs. Megha, observes that while the staff is paid well, physiological safety needs are met, they feel isolated and ignored. She decides to form quality circles where staff can meet weekly to discuss improvement and socialize. She also introduces a wall of fame for the best performers. Identify the two levels of Maslow's need Megha is trying to attempt to satisfy. एक तो क्वालिटी सर्कल बनेगा एंड दूसरा वॉल ऑफ फेम. इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए. वेरी गुड, वेरी गुड. वन इज योर सोशल नीड and one is your esteem needs. ठीक है. One is your social and other is your esteem needs. Explain how these actions will help in achieving balance in the organization. ये आप फिर बाद में खुद से कर लेगा. चलो. Mr. Khanna is a senior manager, always communicates with his team via formal memos and strictly follows the organizational chart. His subordinates, however, feel intimidated, a little afraid, and only tell him what they think he wants to hear. This has led to a lack of genuine feedback and several missed deadlines. Identify the type of barrier in the communication. With only formal memos and organizational chart मतलब हो गया स्केलर चेन को, प्रिस्क्राइब चेन ऑफ कमांड को यूज करता है. तो ये कौन सा बैरियर इंडिकेट हो रहा है कि आप जब तब आके मेरे से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते हैं. सो इट इज अ स्टेटस बैरियर. ठीक है. इट्स अ स्टेटस बैरियर. Suggest three measures Mr. Khanna can take to improve the communication flow in this department. ये आप खुद से कर लेगा. ठीक है. Measures to overcome barrier. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर तब आता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाता है. यहाँ मिस्टर खन्ना का अपना खुद का पर्सनल ईगो है. ठीक है. चलिए आगे बढ़े. Directing is done. Staffing. First one. I'm not a science teacher. I'm so sorry, dear.
First one, with reference to the steps in the staffing process, what does the term placement specially signify? प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है स्टाफिंग में? थैंक यू सो मच. दिस इज JW. What is the meaning of placement? वेरी गुड. सही जगह पे अपॉइंट करना. क्या बात है. धंधे को धंधे की तरह पढ़ेंगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगा. ठीक है. Assigning the selected candidate to a specific job position. Next one. With reference to the sources of recruitment, select the odd one out. समझा नहीं क्वेश्चन? चलो मैं समझाता हूं. Shifting a surplus accountant from Mumbai is basically internal. ठीक है. Promoting a sales executive is also internal. Hiring a retired army officer for a security head position via recommendation using a waiting list of previous walk-in candidate to fill a sudden vacancy. Hiring a retired army officer via a recommendation के थ्रू नहीं होता है. recommendation के थ्रू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को नहीं लिया जाता है. एंड वेटिंग लिस्ट बनाना ऑफ प्रीवियस वॉक इन टू फिल अ सडन वेकेंसी भी होता है. सो इट विल बी ऑप्शन सी. It will be option C. And besides, I think it is external source of recruitment, right? Recommendation is not internal, it is external source. बाकी सारे आपके internal sources के through highlight हो रहे हैं. Chalo, next one. Cyber Safe, an IT firm, realizes they have 500 employees. However, a detailed study shows that due to new automation, the actual work can be managed by 420 people. To prevent immediate layoffs, the firm decides to offer a voluntary retirement and stops fresh hiring. Which aspect of human resource planning is being performed over here? सब गलत बोल रहा है. They have 500 employees एंड डिटेल्ड स्टडी किया उन्होंने. डिटेल्ड स्टडी किया मतलब उन्होंने वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस दोनों फाइंड आउट किया. एक्चुअल वर्क 420 पीपल से हो सकता है बोल के इमीडिएट ले ऑफ नहीं करके वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट निकाल दिया एंड फ्रेश हायरिंग को बंद कर दिया. तो उन्होंने वर्कलोड और वर्कफोर्स दोनों किया. सो इट इज PNQ. बोथ PNQ.
ठीक है, it is both P and Q. A candidate applying for a senior accountant role is given a 20-minute test consisting of complex balance sheet errors to find and rectify. This is done to check his existing proficiency in the field of accountancy. Identify the type of selection. एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करने के लिए सीनियर अकाउंटेंट के एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर हो रहा है देन इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट माय डियर. आपके पास जो आपके अचीवमेंट्स है या एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसी को परखा जा रहा है. इट इज ऑप्शन सी, अचीवमेंट एंड ट्रेड टेस्ट. This is done to check your existing knowledge. Next one. An organization finds that its middle level management lacks the human skills and conceptual thinking required to handle future global project. They decide to enroll these managers in a year-long brainstorming and role-playing workshop. Which concept is illustrated over here? फ्यूचर रोल के लिए उनको रेडी किया जा रहा है. फ्यूचर रोल के लिए फ्यूचर ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए उनको रेडी किया जा रहा है. सो विच कॉन्सेप्ट इज हाईलाइटेड हियर? वेरी गुड नीलेश मिश्रा. डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स. फ्यूचर रोल के लिए रेडी करना इज डेवलपमेंट. ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट. Next, to fill high confidential position of a chief financial officer, CFO, a company approaches a specialized firm that scans the industry, conducts preliminary interview, yani primary beforehand interview, and provides a curated, customized list of top tier talent for a fee. Identify the external source of recruitment used. Very good. Very good, Aryan. Aryan Singh, top. It is placement agency. ठीक है, it is placement agency for a fee. बाहर से हायर करा रहा है. कंपनी अप्रोचेस अ स्पेशलाइज्ड फर्म है, सो इट इज प्लेसमेंट एजेंसी. चलिए, assertion reason. Recruitment is considered as a positive process while selection is a negative process. Recruitment aims to attract a large pool of applicants while selection aims at eliminating the unsuitable at various stages. Perfect, perfect, very good. Both assertion reason are true and reason is the correct explanation as well. ठीक है. Study the analogy. If internal source is promotion, then external source क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज प्रमोशन, दैन एक्सटर्नल सोर्स क्या हो जाएगा? बाहर से रिक्रूट करने को क्या बोलेंगे? इट इज एडवर्टाइजिंग. ठीक है, एडवर्टाइजिंग. कैजुअल कॉलर्स, कोई भी चलेगा. कैंपस, कोई भी चलेगा. ठीक है. प्रेजेंट जॉब प्रोफिशिएंसी इज ट्रेनिंग, देन फ्यूचर पोटेंशियल टैलेंट क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग. एंड फ्यूचर के लिए रेडी करना इज ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज डेवलपमेंट. ट्रू और फॉल्स?
Orientation training is primarily designed for existing employees to learn new machine. Orientation training is designed for the existing employee to learn new machine. क्या कोई भी चीज सिखाने के लिए ओरिएंटेशन होता है या familiarize करने के लिए होता है? Orientation is basically done to familiarize the new employees with the organization, so it is false. Learning new machine is basically आपका refresher training, ठीक है? Refresher training. Next one, workforce analysis helps in identifying whether the organization is overstaffed or understaffed. Very good. It is true. That is right. Chaliye. Next one. A retail chain identifies that it has a vacancy for a store manager. Instead of advertising, they decide to move an assistant manager from nearby outlet to this new role with a hike in salary and authority. This type of internal recruitment is regarded as नए रोल में जा रहा है विथ हाइक इन सैलरी, जॉब रोल अथॉरिटी सब डेजिग्नेशन सब इंप्रूव हो रहा है, तो ये क्या होगा? नो, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर. नो 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 नो. हाइक इन सैलरी है, दिस इज प्रमोशन. लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन, एंड दैट टू असिस्टेंट मैनेजर को स्टोर मैनेजर बनाया जा रहा है, तो जॉब रोल भी तो इंक्रीज हो गया. ठीक है. Identify the kind of selection is described here. It measures the potential of an individual for acquiring new skills and their mental alertness, reasoning, and memory. स्किल का नाम क्या होता है? Acquiring new skills. स्किल मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल. एंड आपका पोटेंशियल किससे पता चलता है? आपके एप्टीट्यूड से. ठीक है. सो इट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. In the context of staffing process, what is the primary goal of orientation? What is the primary goal of orientation? Very good. To introduce and to familiarize the person, right? So to introduce the newcomer with the organization's culture and rules. A factory manager notices that the workers frequently make errors in the same step of a manufacturing process. He organizes a short session specially to identify and fix these specific behavioral errors. Which type of training is this? Frequently make errors in the same step. He organizes a short session to identify and तो ये क्या हो गया? रेमेडियल क्लासेस आपने सुना होगा, रिकवरी क्लासेस, जहां पे आपको आपके एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को रीवायर या रीब्रश कराया जाता है. दैट्स अ रेमेडियल क्लास, राइट? सो इट्स अ रेमेडियल ट्रेनिंग. चलिए, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाइज द स्टेटमेंट? Very good, guys. Very good. That new technologies and retirement constantly create the need for
न्यू हायरिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है. So it's a continuous and an ongoing activity in the organization. चलिए केस स्टडी देखें. The overstaffing crisis at Zenith Manufacturing. Zenith Manufacturing, a traditional automobile parts factory, recently upgraded its assembly line into a fully automated robotic system. The HR manager, Mr. Suresh, conducted a workforce analysis and discovered that while the company currently employs 450 workers, the new technology requires 300. Instead of immediate layoff, Mr. Suresh decides to implement two prolonged strategy. He identifies that 50 workers who are nearing retirement and offers them an attractive financial package to leave early. And he selects 150 of the existing workers who showed high aptitude, that is skill set, and enrolls them in a rigorous 3-month program to learn how to operate the new machine. Identify the specific step of the staffing process that helped Mr. Suresh realize that the factory was overstaffed. Which step of staffing? Yes, very good. It is manpower planning. Analysis अगर हो रहा है, so analysis का step का अगर बात किया जाए, then it is manpower planning. ठीक है. Contrast the two type of analysis, that is workload and workforce, to explain how Zenith Manufacturing reached its conclusion. ये आप खुद से कर लेगा. Workload versus workforce analysis. Identify the type of training mentioned in point 2 above. Point 2 above. अच्छा यहाँ point लिखना मैं भूल गया. एक तो he identifies and दूसरा, this is number 2. He selects 150 of the existing workers who showed high aptitude and enrolls them in a rigorous 3-month program to learn how to operate the new machinery. So what is the type of training in point 2? Very good. It's a job training. Job के लिए ready करना है. So it's a job training. ठीक है. It's a job training. चलिए. Next one. Health First is rapidly growing pharmaceutical giant. The company needs to fill two critical positions, position A and B, where A is a chief scientific officer who requires 20 years of niche research experience and a global reputation. And the company wants to maintain absolute confidentiality to avoid alerting competitors. Grade B, position B is 100 graduate trainees for their new marketing wing. They want young, energetic individuals with the latest academic knowledge but don't mind a lack of prior experience. Recommend the most suitable external source of recruitment for position A and position B. चोरी छुपके कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए अगर हायर करना है जॉब ए, पोजीशन ए को, तो बेस्ट क्या रहेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज्यादा कौन मेंटेन करता है? जब आप किसी थर्ड पार्टी को जब आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हो तो दे एंश्योर दैट आपका कोई भी बात बाहर ना निकले. सो दैट इज प्लेसमेंट एजेंसी. ठीक है. थर्ड पार्टी इज प्लेसमेंट एजेंसी. एंड दूसरा क्या हो जाएगा पोजीशन बी के लिए? 100 ट्रेनीज को लेके आना है, एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा. कैंपस रिक्रूटमेंट. ठीक है. इट इज कैंपस रिक्रूटमेंट. गॉट इट? State two advantages Health First will gain by choosing external recruitment for position B rather than promoting existing staff. Advantages of recruitment आप लिख दीजिएगा. Fresh talent मिलेगा, better choice मिलेगा,
वाइडर चॉइस मिलेगा, ठीक है। चलिए थर्ड वन, Miss Anjali applied for the post of portfolio manager at a prestigious investment bank. She successfully cleared the preliminary screening, and during the next stage, she was asked to perform two tasks. Number one is a stock market simulation where she had to manage a dummy portfolio for an hour to prove her actual trading skills. And second was a session with psychologists who asked her questions about how she handles extreme pressure and general outlook towards risk. After clearing these, the bank contacted her former university professor to verify her character and academic record. Identify the two types of selection test, which is highlighted in task 1 and task 2. उसका एक्चुअल स्किल्स को परखा जा रहा है टास्क 1 में. सो टास्क 1 इज व्हाट ट्रेड टेस्ट आप बोल सकते हो या अचीवमेंट टेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है. ट्रेड या फिर अचीवमेंट टेस्ट आप बोल सकते हो. एंड टास्क 2 में क्या हो जाएगा? इमोशनल कोशेंट को चेक करने के लिए किया जा रहा है. सो टास्क 2 नहीं, एप्टीट्यूड नहीं होगा. एप्टीट्यूड इज स्किल टेस्ट. इट इज पर्सनालिटी टेस्ट. टास्क 2 इज योर पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है. पर्सनालिटी टेस्ट. Identify the step in the selection process performed by bank when they contacted her professor. Reference and background verification, ठीक है. Reference and background checking. Reference and background checking. And distinguish between training and development on the basis of focus and initiative. ये आप खुद से कर लेगा, ठीक है. Training is initiated by the employer, development is initiated by the employee. चलिए आगे बढ़े. लास्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोलिंग. बस another 10 minutes and we are done. With reference to the features of controlling, what does the term management by exception signify? Thank you so much. Fact ki zindagi. Nice name. What do? You spill facts. Very good. Very good. What is management by exception? It's basically focusing only on those area जहां पे बहुत ज्यादा डेविएशन हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, which needs to be handled and taken care personally. ठीक है. Next, with reference to the importance of controlling, select the odd one out. Which one is not the importance of controlling? Please stop asking me about English language. What is done, cannot be undone. Primary objective and mission for the next 10 years is basically planning का importance, ठीक है, not controlling का. So B is your odd one out. Yeah, option B is planning and not controlling. So B is your odd one out. Next, Auto Parts Limited sets a standard that defect should not exceed 0.5% of total production. In January, the defect rate was 0.4%, but the labor cost rose by 5%. The manager ignores the defect but
Immediately initiates an inquiry into the labor cost. Which concept of controlling is the management manager applying over here? What is he applying? सिर्फ एक्सेप्शनल केस में वो इंटरफेयर किया, एंड दैट टू तब जब कोई दूसरा डेविएशन आया. सो इट इज बोथ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड एट द सेम टाइम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एज वेल. बोथ पी एन क्यू. ठीक है. A marketing manager identifies that his team sold 900 unit against a target of 1000. Upon investigation, he finds that a 3-day power outrage at the warehouse prevented the dispatch of the remaining 100 units. Identify the specific step in controlling process being performed here. इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो भी लूप होल्स थे या प्रॉब्लम थे उसको फाइंड आउट किया जा रहा है. वेरी गुड. दिस इज JW. वेरी गुड. इट इज एनालाइजिंग डेविएशन. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन इज एसोसिएटेड विथ एनालाइजिंग डेविएशन. चलिए. प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस विदाउट प्लानिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाइज द स्टेटमेंट? प्लानिंग क्या करता है? बेंचमार्क सेट करता है. एंड कंट्रोलिंग क्या करता है? अधेरेंस करता है ऑफ दो स्टैंडर्ड. राइट. So planning sets the benchmark and controlling makes sure that those standards are achieved or met. So it is option A. A supervisor in the garment factory is assigned 40 tailors to monitor. He finds that it is impossible to check the quality of every shirt and misses several defects. His manager suggests reducing the number of tailors under him to 15. Which concept is adjusted over here? Very good. This is JW. Quite impressed, huh? Span of control. The number of subordinates that should report to superior. ठीक है. चलिए. Next one. Assertion and reason. Controlling is both a backward looking and forward looking function. It compares past performance with standard and provides the data to improve future plans. Very good. It will be option A. Both assertion, reason true, and reason is the correct explanation. ठीक है. Controlling is both forward and backward looking at the same time. Backward looking इसीलिए क्योंकि जो established standard था उसको देखना, and जो भी अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं हो पाया तो आगे क्या करना है उसके लिए एक्शन लेना. So it is both backward and forward looking. Analogy. Planning is a prerequisite. Controlling is
नहीं 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 नहीं, अगर प्लानिंग इज प्राइमरी प्री रेक्विजिट देन कंट्रोलिंग इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ठीक है, प्लानिंग इज प्री रेक्विजिट देन यस, गुड अक्षर. Prerequisite means it is required, primary है, तो controlling is basically taking actions against whatever deviation has happened. If things do not go as per plan, ठीक है, that is taking action to resolve that. Key result area is critical point control, then extraordinary matters में क्या हो जाएगा? Very good, very good, Aryan. It will be control या जो भी आप बोलो management by exception. ठीक है, control और management by exception. चले आगे बढ़े. ट्रू एंड फॉल्स. स्टैंडर्ड शुड बी रिजिड एंड नेवर चेंज्ड इवन इफ द बिजनेस एनवायरनमेंट शिफ्ट्स. क्या ऐसा होता है कभी भी? क्या स्टैंडर्ड कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. कंट्रोलिंग रिवील्स डेफिशिएंसी in existing plans and provide a basis for future planning. Very good. कुंडली सिंह, आई डोंट नो, सी कुंडली सिंह, कैसा कैसा नाम रखता है तुम लोग अपना. दैट इज ट्रू. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. अ रिटेल चेन मैनेजर notices that sales in the electronic section are 10% below the target. He decides to increase the commission for sales staff in that section to remove deviation. This step represents. Very good. It is taking corrective action. ठीक है. पढ़ रहा है कि सो गया है सब? हेलो हेलो, जागो थोड़ा, सो मत जाना. बस ज्यादा नहीं, अब 4 दिन और खाली, कॉमर्स खत्म, फिर बुक उठा के फेंक देना, जला देना. चलिए. प्रिसिजन टेक, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग specialized in surgical instrument, sets a standard to produce 1000 unit per month with a maximum defect rate of 1%. In October, the company produced 950 units with a defect rate of 3%. The production manager, Mr. Khanna, investigated the matter. He found that the production shortfall 50 units was due to minor 2-hour power glitch, which he decided to ignore. However, high defect rate 3% was tracked back to a faulty calibration in the main laser cutting machine, which is a key result area for the firm. He immediately called out for an expert technician to recalibrate the machine and updated the maintenance schedule for the next quarter. Identify and explain 2 techniques of analyzing deviation being used by Mr. Khanna. That is okay. Enjoy your dinner. Very good, Manvi. Very good. It is critical point control and it is management by exception. ठीक है? 2 techniques of analyzing deviation are critical point control and management by exception. Which step of controlling process is illustrated when Mr. Khanna called the expert technician to fit
Fix the machine. Which step of controlling is highlighted here? Fix करना है. Very good. Taking corrective action. Perfect. Lovely. Taking corrective action. State how controlling in this scenario will help in better planning for future. ये आप खुद से बना लेगा. ठीक है. चलिए next one. Miss Tanvi, the CEO of Organic Bites, a healthy snack startup, is frustrated. She spends weeks creating a detailed marketing plan for a new protein bar. However, she did not set up any system to monitor weekly sales or customer feedback. At the end of the quarter, she realized that sales were 40% below the target because the packaging was difficult to open. A detail she could have fixed in the first week if she had a monitoring system in place. With the reference to the above case, justify the statement planning is meaningless without controlling. ये आप खुद से कर लेगा. If Miss Tanvi now uses the data from this failed launch to revise her packaging and sales target for the next year, which feature of controlling is she leveraging? कौन सा फीचर आ रहा है? फीचर आ रहा है बेटा, स्टेप नहीं. फीचर 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 फीचर. She wants to revise, redo it. नो 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 नो. आगे का तैयारी. She is going to revise her packaging and sales. So what is controlling doing? Control is forward looking. आगे देख के चीजों को ठीक करना. Feature is forward looking. Controlling is forward looking. ठीक है. Forward looking beta, forward looking. Got it? चलिए, last one. Global Logistics is rapidly expanding firm. One of the senior managers, Mr. Roy, is currently supervising 25 subordinates directly because the work involves complex international custom laws and non-routine problem solving. Mr. Roy is often overwhelmed. He frequently misses errors in the paperwork, leading to heavy fines for the company. The management decides to hire 2 more assistant managers and redistribute the subordinates so that each manager oversees only 8 to 9 people. Identify the concept of management that was initially ignored but later corrected by global logistics. More than required, very good. More than required लोग पहले थे and then उसके बाद लोग को हायर किया गया and superior subordinate का रेशियो को ठीक किया गया. So it is span of control. ठीक है, it is span of control. Explain the impact of a too large span of control as seen by Mr. Roy's initial situation. ये आप खुद से बना देगा. Manager becomes overwhelmed, supervision becomes ineffective, errors frequently happen. कुछ भी आप लिख देना केस के हिसाब से, ठीक है. Controlling helps in decentralization of authority. Discuss the statement in the context of a manager delegating the task to subordinate. ये भी आप बना देगा. Because controlling leads to delegation of authority and manager अपने employees को task assign कर सकता है जिससे कि manager can detect deviation much more easily. ठीक है. चलो, with this we complete our
कंट्रोलिंग एज वेल। डन, हो गया। I hope you all are having a gala time, preparing for your examination and liking the questions which is being brought forth. सर पॉडस्कॉर्प स्टोरी में ही करा दीजिए। जब मैं स्टोरी करा रहा था तो लोग बोल रहे थे इंग्लिश कराओ, इंग्लिश करा रहा था तो लोग बोल रहे स्टोरी कराओ। नाउ नाउ आई गॉट इरिटेटेड। अब मैं अगला बैच को पढ़ाऊंगा। आई एम डन। भैया ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ना। हाँ सो सैम्पल पेपर्स परचेज करके सॉल्व कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इनसाइट मिल जाएगा। आपकी मर्जी, आपको करना है आप करिए, आपको नहीं करना है आप टोटली योर कॉल। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में है। कैन वी राइट सेंट्रलाइजेशन इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2? वेट, सेंट्रलाइजेशन इन 3 पार्ट 2 किस कॉन्टेक्स्ट में बेटा? कैन वी राइट सेंट्रलाइजेशन? नो 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 नो, इट लीड्स टू इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। नो, trying to control everything leads to end up controlling nothing, so ineffective management हो जाएगा। ठीक है, not centralization। चलो, have a great time preparing, love you all, अच्छे से पढ़ाई करिए। I'll see you tomorrow with marketing mix and consumer protection का MCQs and case studies and we'll wrap up। सर क्वेश्चन में एक ना एक तो स्टेप का क्वेश्चन आएगा ही ना, डेफिनेटली आएगा, बट देन कौन सा आएगा वी डोंट नो। नो, आई विल बी टेकिंग इवनिंग में क्लास। ठीक है सर, प्लीज गेट ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। अंकन, आपने प्रेजेंट में लिखा, पास्ट में लिखा, डोंट वरी, नंबर मिल जाएंगे जो मिलना होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।